Hey guys, welcome back to Error Math. We are studying chapter 3 matrices. So in the last video we have completed exercise 3.2 up till question 11, and in this video we'll continue the remaining problems on exercise 3.2. So we will start with problem 12. In the 12th problem again we have to find values of x, y, z and w, and expression is given like this. So solving this expression, 3 multiplied by this matrix and adding these two matrices, we get answer like this, and equating all the corresponding elements we get 3x is equals to x plus 4, and the answer for x will be 2, and then comparing 3w is equals to 2w plus 3, we get w is equals to 3. Then for 3z is equals to minus 1 plus z plus w, and 3y is equals to 6 plus x plus y. For these two equations, substituting w in equation 1, we get z is equals to 1, and substituting x in equation 2, we get y is equals to 4. So now we found x, y, z and w respectively. You can pause the video to note this down. In the 13th problem, हमें f of x दिया है as trigonometric function, and we have to show that f of x into f of y is equals to f of x plus y. अब यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है x का, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन y का फाइंड करेंगे. We have to just substitute y in terms of x. So f of y becomes cos y minus sin y and cos y respectively. So we have to now prove that f of x into f of y is equals to f of x plus y. तो पहले हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. हमें f of x plus y फाइंड करना है. That means we have to just substitute matrix of this function into x plus y, and this is the resultant matrix. And in the LHS side of this equation, we have to multiply f of x into f of y. So multiplying f of x into f of y, it is a 3 by 3 matrix. We can easily multiply this square matrix and the answer will be of order 3 by 3 only. So multiplying first row with first column, cos x into cos y minus sin x into sin y plus 0 into 0. So this is our first element, and for the second element, cos x into minus sin y minus sin x into cos y and 0 into 0. And for the last element, cos x into 0 is 0, minus sin x into 0 is again 0, and 0 into 1 is again 0. Moving for the second row, sin x into cos y plus cos x into sin y plus 0 into 0, which is 0. And for second row, second column, sin x minus sin y plus cos x into cos y. And for third row, first column, 0 into cos y plus 0 into sin y plus 0 into 1, which is again 0. And second column के element के लिए भी it will be 0 plus 0 plus 0. And for the last and final element, 0 into 0 is 0, 0 into 0 is again 0, and 1 into 1 it is plus 1. So this is our matrix multiplication, guys. So simplifying all these elements, हमें पता है ये एक identity है, cos A into cos B minus sin A into sin B. It is an trigonometric identity of cos A plus B. Similarly, इस element में हम लोग अगर negative sign बाहर ले लेंगे, and we have the identity of sin x plus y as sin x plus cos y plus cos x plus sin y. और ये एलिमेंट तो हमारा 0 है. एंड सिमिलरली ये भी आइडेंटिटी sin x plus y की है, एंड दिस आइडेंटिटी इज अगेन ऑफ cos a cos b minus sin a sin b, which is cos a plus b. तो यहाँ पे cos x plus y आएगा. यहाँ पे हमारा एलिमेंट 0 तो है ही. सो फाइनली 0 0 एंड 1 फॉर द लास्ट रो. अब इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है. सो दैट मीन्स f of x plus y is equals to f of x into f of y. It is hence proved. You can pause this video now to note this down. Moving ahead for the 14th problem, इसमें दो questions है, and we have to show that the left hand side of the equation is not equal to the right hand side of the equation. तो अब यहाँ पे matrix multiplication करना है. First question का हम लोग LHS लेते हैं और इन दोनों matrix को multiply करते हैं. It is a 2 by 2 matrix. We can perform matrix multiplication and the answer will be of order 2 by 2. So multiplying both these matrix, we get 5 into 2 plus minus 1 into 3 for this element, and for this element it is 5 into 1 plus minus 1 into 4. Similarly, for this element it is 6 into 2 plus 7 into 3, and for the last element it is 6 into 1 plus 4 into 7. So after multiplying and adding all the elements, we get the final matrix as 7, 1, 33 and 34. For the right hand side of this equation, multiplying these two matrix, we get this element as 2 into 5 plus 6 into 1, and this element as 2 into minus 1 plus 1 into 7. For the second row, first column element, it is 3 into 5 plus 4 into 6, and for the final element it is 3 into minus 1 plus 4 into 7. And after performing multiplication and addition, we get answer as 16, 5, 39, 25. So we can clearly see that LHS is not equal to RHS. You can pause this video to note this down.
And similarly, as first question, we have to solve this for second question. Try to do this by yourself. हमें 3 by 3 matrix multiplication करना है. So the answer for the LHS will be like this. For RHS, the answer is, we can clearly see that LHS का matrix is not equal to RHS का matrix. So do this question by yourself and cross check your answers here. Moving ahead for the 15th question. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. सो वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स A एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं A स्क्वायर. नाउ A स्क्वायर इज नथिंग बट A इंटू A. हमें सिंपली A इंटू A का मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे. तो कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर होता है जैसे A स्क्वायर, का मतलब ये नहीं है कि हम सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे. 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होता है. A का स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A. इसका आंसर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं होगा. हमें इसका प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो A इंटू A का मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इट इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड आंसर भी हमारा 3 by 3 मैट्रिक्स में ही आएगा. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी 2 into 2 which is 4 plus 0 into 2 which is 0 plus 1 into 1, and for second element it is 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into minus 1, and for last element of this row 2 into 1 2, 0 into 3 0, and 1 into 0 again 0. Moving ahead for the second row, 2 into 2 4, 1 into 2 2, and 3 into 1 is 3. For second column it is 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into minus 1 minus 3. And for last column of this row, 2 into 1 2, 1 into 3 3, and 3 into 0 it is 0. And for the element of last row it is 1 into 2 minus 2 0, and for second column it is 0 minus 1 0, and for the last element it is 1 minus 3 and 0. So after simplifying this, we'll get our answer for A square, which is 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 and minus 2. तो A स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है. अब वी हैव टू फाइंड माइनस 5A. माइनस 5A इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A विथ 5, विच इज 10 0 5, 10 5 15, 5 minus 5 and 0. तो अब लास्ट यहाँ पे हमें 6i फाइंड करना है. वी नो दैट i इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अब यहाँ पे सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम ऑर्डर 3 by 3 का लेंगे. सो मल्टीप्लाइंग 6 विद ऑल दी एलिमेंट्स. अब यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, सो इट विल बी लाइक दिस. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट a स्क्वायर, 5a and 6i in this equation. So after substituting all these matrix in this equation, we can write like this, and after adding and subtracting this is our final matrix after performing the operations in this equation. So ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे a क्यूब भी होगा तो हम लोग a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. पहले a इंटू a, देन a स्क्वायर इंटू a. अगर a स्क्वायर है, a क्यूब है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग इसके एलिमेंट का स्क्वायर या क्यूब करेंगे. हमें इसका मल्टीप्लिकेशन एज इट इज करना होगा जैसे हम अब तक करते आए हैं. सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट दिस डाउन. Moving for the 16th question. 16th question भी सेम हमें प्रूव करना है that substituting a in this equation we get answer as 0. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे a क्यूब है, तो अब इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फॉर a स्क्वायर. a इंटू a हम सिंपली करेंगे. लास्ट सम में हमने जैसे किया था सेम वैसे ही करना है. मैं आपको इसका आंसर शो करता हूँ, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करना. एंड a स्क्वायर फाइनली विल बी 5 0 8 2 4 5 8 0 13. तो अब ये हमें a स्क्वायर मिल गया है एंड हमें चाहिए a क्यूब. तो विल सिंपली मल्टीप्लाई a स्क्वायर इंटू a. तो अब a स्क्वायर हमारे पास है और a भी है. विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज. देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जस्ट 5 into 1 plus 0 into 0 plus 8 into 2 is 16, which is nothing but 21. And for the second element it will be 5 into 0, 0 into 0, 8 into 0, सब 0. तो इसका आंसर भी 0. For the last column it will be 5 into 2 10 plus 0 plus 3 into 8 24, which is 34. And for second row 2 into 1 2, 4 into 0 0, and 5 into 2 is 10, which is 12. For second column 2 into 0 0, 4 into 2 8, 5 into 0 0, so answer will be 8. And for last column it is 4 plus 4 plus 15, which is 23. And for element of last it is 8 plus 0 plus 26, which is 34. And for second column it is 0 plus 0 plus 0. For the last element it is 16 plus 0 plus 39, which will be 55. तो अब a क्यूब हमें मिल गया है and now we have to find 6a square. अब a square तो हम लोग ने already find कर लिया था. We'll simply multiply a square with 6. तो finally a square becomes 30 0 48 12 24 30
48, 0 एंड 78। सेम हमें 7a और 2i फाइंड करना है अभी। तो 7a के लिए भी सिंपली हम लोग, हमारे पास a है, a को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली अगर हम इक्वेशन में a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, अब यहाँ पे 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डायगोनल एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी लाइक दिस। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे और इस मैट्रिक्स से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा सारे एलिमेंट्स। तो ये अब आप खुद करो, सिंपल प्लस माइनस करना है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं दैट ये आप सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे, दैट मींस इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। सो देयरफॉर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट दिस डाउन। पहले यहाँ पॉज करो एंड देन पॉज हियर। So moving further for the 17th question, we have given matrix A and identity matrix. We have to find K so that A square is equals to KA minus 2i। तो देखते हैं भी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है एंड वी कैन फाइंड A स्क्वायर इजीली। हमने लास्ट सम में ही देखा है, हमें बस A इंटू A करना है। तो हम A इंटू A फाइंड करेंगे एंड एट द राइट हैंड साइड इट इज K इंटू मैट्रिक्स A माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे K जो है सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज अ स्केलर, 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स के साथ। सो A स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन K into this matrix का multiplication 2i will be like this. Now simply we will subtract this matrix from this matrix, which is simply 3k minus 2k, 4k and minus 2k minus 2. So by equating the corresponding element we can find the value of k. तो अब यहाँ पे सबसे छोटा मुझे ये 4 is equals to 4k दिख रहा है, तो मैं 4 is equals to 4k लेता हूँ। 4 4 कैंसिल, k will be equal to 1। अगर आपको k की वैल्यू चेक करनी है तो इस इक्वेशन में k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 3 into 1 which is 3 and 3 minus 2 is 1, that is 1। तो सारे एलिमेंट्स के लिए k is equals to 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, that means हमारा ये करेक्ट आंसर है। So you can pause this video to note this down. So for the 18th problem we have given a matrix A and I is the identity matrix of order 2 and we have to show that I plus A is equals to I minus A into this matrix. तो अब हमें ये शो करना है that LHS is equals to RHS. So first we will take LHS I plus A. तो I identity matrix है order 2 का, A भी एक 2 by 2 का matrix है and the answer will be this. Simply हम इसको ऐड करना और कुछ इसमें है नहीं इतना। अब RHS के ऊपर आते हैं हम लोग, which is I minus A into cos alpha minus sin alpha and cos alpha. So we will simply write all the matrix in this format only, which is I minus A matrix into this matrix. I minus A करेंगे simple, 1 minus minus gets cancelled, it will be plus tan alpha by 2, 0 minus tan alpha by 2 and 1 minus 0 is 1. Now multiplying these two matrix, which is 1 into cos alpha plus tan alpha by 2 into sin alpha and so on. So मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। अभी जितने भी tan alpha by 2 वाले टर्म्स है, we can write tan alpha by 2 as sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 because we know that tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Now writing all these tan alpha by 2 वाले sums with sin alpha by 2 and cos alpha by 2, it will be like this. Now we can simply cross multiply this. cos alpha by 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और सारे एलिमेंट्स में ऐसे ही होगा, cos alpha by 2 will be cross multiplied. So after cross multiplying the matrix looks like this. So now again applying the trigonometric identity of cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी एज cos a माइनस बी। तो यहाँ पे a अल्फा है और b अल्फा बाय 2 है, सो विल सिंपली राइट cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो इन दोनों के लिए हम लोग cos अल्फा बाय 2 लिखेंगे और नीचे cos अल्फा बाय 2 तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों अब यहाँ पे सेम है। इन दोनों के न्यूमरेटर के लिए वी विल राइट द आइडेंटिटी एज cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। And for these two elements, it is minus sign if we take outside, sin A cos B minus sin B cos A. For this identity, sin A cos B minus cos A sin B, it is simply sin A minus B. So similarly for this also, लेकिन यहाँ पे हमें minus sign बाहर निकालना पड़ेगा, so this will become minus sin alpha minus अल्फा बाई। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबके cos अल्फा बाई 2 तो है as it is। तो for the first element, let us write this as cos अल्फा minus अल्फा बाई 2 divided by cos अल्फा बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a minus a divided by 2, 2a minus a is nothing but a by 2। So this angle becomes cos अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी cos अल्फा बाई 2 है, so this will be cancelled and answer for this will be 1। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, इसका भी आंसर 1 होगा। So for this element, ये जो एंगल है
इट विल बी sin अल्फा बाय 2 और डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाय 2 है, सो दिस बिकम्स tan अल्फा बाय 2. अब यहाँ पे ये भी सेम है लेकिन नेगेटिव साइन है, सो दिस विल बी minus tan अल्फा बाय 2. एंड फाइनली आवर आंसर विल बी लाइक दिस. सो वी कैन क्लियरली सी दैट LHS वाला इक्वेशन इज इक्वल टू RHS वाला इक्वेशन. यही हमें यहाँ पे शो करना था. यू कैन पॉज दिस वीडियो टू नोट दिस डाउन. अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या आइडेंटिटी के लिए तो रिवाइंड करो वीडियो और फिर से इसको देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. So moving for the 19th question here, it is a word problem now. So let us see what it is. So a trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% of interest per year and the second bond pays 7% ka interest. So using matrix multiplication, determine how to divide this 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of first 1800 rupees and second of 2000 rupees. तो अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और फाइंड करना है कि इस 30,000 को इन दो टाइप के बॉन्ड्स में हम लोग कैसे डिवाइड करें, कैसे शेयर करें. इफ द फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800. तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. वी फर्स्ट हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अनदर मैट्रिक्स ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर. तो अब इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें सॉल्व करना है. टू राइट दिस डेटा इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, तो पहले तो हम लोग इसका डेटा कलेक्ट करते हैं. वी हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 30,000, अ फंड ऑफ 30,000 एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इट इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. तो हमको इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है कि कैसे उसको डिवाइड करेंगे हम. Let us take X as the investment in the first bond. So जो second investment होगा it will be 30,000 minus X. तो ये डेटा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का. तो अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट के डेटा की. तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए it is 5% एंड सेकेंड बॉन्ड के लिए it is 7% पर ईयर. तो अब ये काफी सिंपल है. अगर आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बिना इसको सॉल्व करना होता तो ये काफी सिंपल होता. हम लोग सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करते यानी एक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 7% और जो इसका जो टोटल इंटरेस्ट है इट इज इक्वल टू 1800. ये इसका सिंपल से इसका मल्टीप्लिकेशन होता इफ वी हैव नॉट गिवन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. लेकिन हमें इसका आंसर निकालना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इस डेटा को हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा रो मैट्रिक्स का, द डेटा ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो डेटा ऑफ एनुअल इंटरेस्ट है उसको एक कॉलम मैट्रिक्स में करते हैं. सो इसका ऑर्डर विल बी 1/2 एंड इसका ऑर्डर विल बी 2/1 सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस. So to obtain an annual interest of 1800, our equation will be matrix of investment into matrix of interest is equals to 1800. अब यहाँ पे 5/100 लिखा है क्योंकि ये 5% और 7% है. So we'll simply multiply this. तो अभी ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है. It is x into 500 plus 30,000 minus x into 7/1800. यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों भी. So 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो अंदर. 30,000 into 7 is 21 and 4 zeros minus 2x. So this will be 2,10,000 minus 2x डिवाइड बाय 100 is equals to 1800. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इक्वेट करना है हमें सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं. So 100 will be multiplied by 1800 and finally अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे 2,10,000, the answer will be 30,000 and dividing it by 2 it will be 15. So the value of x is 15,000. So x हमने कंसिडर किया था इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट बॉन्ड. So the investment in the first bond is of rupees 15,000. Similarly for 30,000 minus 15 अगर करेंगे so it will be 15,000. So for 1800 का annual interest it will be divided into 15 equally. This was the answer for first question. Second question के लिए भी हमें सेम करना है. सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा but for annual interest of. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x का एज 5,000 rupees. तो अगर x 5,000 है for the first bond, so investment in the second bond will be 30,000 minus 5,000, 25,000. So for this, the investment will be distributed as 5,000 and 25,000. So this is how we can apply matrix multiplication in any problem. तो ये कुछ इतना टफ नहीं है, आपने देखा काफी इजी है. अगर आपको बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, आपको बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स आता है, तो आप इजीली कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट डाउन करो एंड नोट दिस स्लाइड ऑल्सो. सो मूविंग फॉर द 20th प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है दैट द बुक शॉप of a particular school has 10 dozen of chemistry books
8 dozen of physics, 10 dozen of economic books. Their selling price are 80, 60, 40 respectively. We have to find the total amount the bookshop will receive from selling all the books. तो अब इसका डेटा हम कैसे करेंगे, ये अभी काफी सिंपल दिख रहा है. एक सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स होगा और एक टोटल बुक्स का मैट्रिक्स होगा. लेट द सेलिंग प्राइस वाला मैट्रिक्स विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1 रिटन लाइक दिस, और एक मैट्रिक्स होगा बुक्स का जो कि हम कंसिडर करते हैं इसे एक एज अ रो मैट्रिक्स ऑफ 10, 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे क्योंकि हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, क्वेश्चन में डजन दिया है, सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 12. सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल दीज बुक्स विल बी, हम लोग इसका सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस इन दिस मैट्रिक्स विद ऑल दीज एलिमेंट्स. दिस विल बी 120, 96 and 120, and simply we will multiply this one row with this one column. तो हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा which will be 120 into 80 plus 96 into 60 plus 120 into 40. So that will be 9600 plus 5760 plus 4800. So total करने के बाद इसका आंसर 20,160 आएगा. So this will be the total amount received by selling all the books, and this is the way to simply convert any data into matrix and to apply matrix algebra. You can pause this video to note this down. Now coming for the 21st problem, it is an MCQ. We have to assume X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 by n, 3 by k, n by 3 and p by k respectively. So choose the correct answer in exercise 21 and 22. So 21 question is that the restriction on n, k and p so that p into y plus y into w will be defined are. So according to this data, p का order है p by k, y का order है 3 by k, प्लस मैट्रिक्स W का ऑर्डर है n by 3 एंड मैट्रिक्स Y का ऑर्डर तो 3 by k है. सो P इंटू Y का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वी नो दैट P मैट्रिक्स का कॉलम मस्ट बी इक्वल टू Y मैट्रिक्स का रो, दैट मीन्स K मस्ट बी इक्वल टू 3. तो पहले तो हमें ये चीज मिल गई कि K विल बी इक्वल टू 3 एंड द आंसर फॉर P इंटू Y विल बी गिवन बाय मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा P मैट्रिक्स का रो इंटू Y मैट्रिक्स का कॉलम विच इज P क्रॉस K. सो द आंसर फॉर P इंटू Y उसका ऑर्डर विल बी P इंटू K प्लस सिमिलरली W इंटू Y यहाँ पर है, W का कॉलम और Y का रो दोनों में इक्वल है 3, 3. W इंटू Y का आंसर जो हमें मिलेगा उसका ऑर्डर होगा n by K. तो अभी यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन तब होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो. So that means P must be equal to n and K is equals to K already है. तो हमें इसके restrictions मिल गए that P must be equal to n and K must be equal to 3 होगा. So P into Y plus W into Y will be defined. Option A is the correct answer with K is equals to 3 and P is equals to n. Simple था, इसमें थोड़ा सा logic use करना था. So moving ahead for the next question, if n is equals to P, then the order of the matrix 7x minus 5z is. तो अभी यहाँ पे हमें ऊपर दिया है x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by n एंड z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by p. तो अब यहाँ पे हमें n is equals to p दिया है, तो सिंपली हम लोग 2 by n और 2 by p लिख सकते हैं इसको. सो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो अब यहाँ पे क्योंकि n is equals to p दिया है हमें, सो दैट मीन्स 2 by n और 2 by p ये दोनों भी इसका ऑर्डर हो सकता है. दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ 7x minus 5z इज ईदर 2 by n और 2 by p because we have given n is equals to p. So you can pause the video to note this down. So that's it guys, we have completed exercise 3.2 here. I hope you understand all the questions. So practice these kind of questions by yourself and try to solve different types of problems based on these topics. So the next video will be on transpose of a matrix and symmetric and skew symmetric matrix. So till then practice all the previous topics. If you are new to error math, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you can get notified for our every new video. So stay safe and keep studying well. See you in the next video.